आज के इस सेक्शन में हम देखेंगे 3 टर्म्स के बारे में अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्योर 1908। 3 टर्म्स हैं: ऑर्डर, डिक्री और जजमेंट। इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है? क्वाइट ऑफन हम सुनते हैं किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग में दैट ऑर्डर हैज़ बीन डन, फाइनली जजमेंट हैज़ कम, बिटवीन द पार्टीज ए डिक्रीज हैज़ बीन पास्ड। तो व्हाट इज द डिफरेंस? तो वन बाय वन देखते हैं। ऑर्डर, as per definitions clause section 214, order means the formal expression of any decision of a civil court which is not a decree. Order एक सिंपली समझे तो एक कमांड की तरह है। इट इज़ नॉट फाइनल। ऑर्डर के बाद और दूसरा ऑर्डर भी हो सकता है, उसके बाद और भी ऑर्डर हो सकता है। ऑर्डर इज लाइक ए कमांड towards the any party, either of the parties, to perform or submit a future task, future assigned task. Now comes the decree. As per definitions clause section 22 of CPC, decree means the formal expression of an adjudication which, so far as regards the courts expressing it, conclusively determines the right of the parties with regard to all or any of the matters in controversy in the suit, and may be either preliminary or final. It shall be deemed to include the rejection of a plaint and the determination of any question within section 144, but shall not include any adjudication from which an appeal lies as an appeal from an order, or any order of dismissal for default. डिक्री हमेशा दो पार्टियों के बीच के राइट्स को डिटरमाइन करता है। ये प्रिलिमिनरी भी होता है, फाइनल भी होता है। जजमेंट, as per definitions clause 29 of CPC, judgment means the statement given by the judge on the grounds of decree or order. In judgment, decree का व्याख्यान होता है, order होता है। Judgment is like a elaboration of whatever the proceeding was done, and the result in the form of decree or order has been given, and it is encompassed within the judgment. तो जजमेंट एक तरह का सुपर सेट है डिक्री का या ऑर्डर का। अब हम देखेंगे डिफरेंसेस के बारे में। डिक्री एंड ऑर्डर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? डिक्री सूट में होता है, ऑर्डर प्रोसीडिंग्स में होते हैं। ऑरिजिनेट डिक्री originates from a suit, order originates from a proceedings. In decree, right of parties with regard to all or any of the matters in controversy is considered. Right of parties can or cannot be final. In order, decree may be preliminary or final. Order, it is ongoing, मीन्स ऑर्डर के बाद एक बार और भी ऑर्डर हो सकता है। डिक्री, they are appealable. Order, every order is not applicable. In decree, second appeal lies to the High Court. In order, there is no second appeal as in case of orders. यानी एक ऑर्डर हो गया तो दूसरा सेकंड अपील उसमें नहीं होगा। In every suit, under the column decree, in every suit there is only one decree,
एक्सक्लूडिंग सम एक्सेप्शनल सूट्स, यानी कोई एक सूट इंस्टीट्यूट होता है तो उस पर एक ही डिग्री होगी, लेकिन देर आर सम एक्सेप्शन ऑल्सो लाइक suits for possession, men's profit, administration or preemption suits, mortgage suits, partnership dissolution suits, suits for accounts, partition suit, as provided under Order 20 and Order 34 of the Code of the CPC. In these, there can be preliminary and final decrees. But other than this, in any suit, there is only one decree. Order. In every suit or proceeding, there can be any number of orders passed. And it is done, it is commanded so that to bring the further more and more facts, to have a more crystal clear overview of the plant. Decree and judgment. Now we will see the difference between decree and judgment. जैसे कि हमने पहले कहा, जजमेंट इज द सुपरसेट ऑफ डिक्री. जजमेंट इज द जस्टिफिकेशन बाय कोर्ट पासिंग डिक्री. अब उस जजमेंट के अंदर में होता है डिक्री. इट इज द वेरी बेसिस ऑफ जजमेंट, यानी एक तरह से जजमेंट एक कंटेनर है और उसके अंदर का इंग्रेडिएंट्स है डिक्री. सेकेंडली, डिक्री इट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स बिटवीन द पार्टीज. Judgment, it is the final opinion of court. Natural, court applies its mind, commands anything. Now, when there is a suit between the two parties and it is a controversy over their rights, so finally a judgment is done and a decree is made. And in that decree, it is determined that to which party there will be such things, to which party there will be that thing likewise. So finally, decree, it is the determination of rights between the parties. Judgment, it is the final opinion of court. So it was all about these order, decree and judgment. Thank you everybody.